Brain teaser of the chapter mensuration of class 8. The brain teasers tick the correct option. The volume of a cube of side 0.01 meter in cubic centimeter is. The volume of cube is side is 0.01. Side is 0.01. Now volume equal to cube of 0.01. Cube means iska cube. Multiply 3 times. You will get 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to decimal place. The right option is 0.00001. Next, if the height of the cylinder is halved, the volume will be volume of cylinder equal to pi r square h. If the height is half, if height is 1 by 2, then the volume equal to pi r square h by 2. It means 1 by 2 times. If the height of the cylinder is half, then the volume will be half, 1 by 2 times. Next, the area of trapezium having two parallel sides 10 cm and 12 cm, height is 4 cm. Simple question. Area of trapezium, formula of area of trapezium, 1 by 2 sum of parallel sides into height. Okay. 1 by 2 sum of the parallel sides means 10 plus 12 and height is 4. Cancel to 22 2s are 44 centimeter square. It means 44 centimeter square by using the formula. Next, the number of faces of a tetrahedron. Tetrahedron is one triangle and 4 surfaces. Okay. Number of faces 4. Here is the option F4. Number of faces in tetrahedron is 4. If the length of side of a cube is double, then the ratio of the volumes of new cube and the original. If the side is volume of original is a cube and volume of new 2a whole cube, it means 8a cube. What is the ratio? New cube 8 is to 1. The ratio is 8 is to 1. रेशियो कैसे निकालेंगे? v डैश बाई v. 8a क्यूब बाई a क्यूब. It means 8 is to 1. Next, find the number of edges of a polyhedron having 20 faces and 12 vertices. Number of edges निकालने हैं. The Euler's formula is f plus v minus e equal to 2. This is the formula. Euler's formula. F means 20 plus vertices is 12 minus e equal to 2. It means minus e equal to 32. 2 minus 32 is minus 30 and edges equal to 30. How many edges? 30 edges. This is the solution. Next, find the surface area of cube whose volume is 729 meter cube. सरफेस एरिया निकालना है. आपको वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम इक्वल टू 729 मीटर क्यूब. इट मीन्स साइड ऑफ क्यूब इज क्यूब रूट ऑफ 729. किसका क्यूब है 729? 9 मीटर. इट मीन्स साइड ऑफ क्यूब इज 9. फाइंड द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर. 6 इंटू 9 स्क्वायर. इट मीन्स 81. This will be 6 1 ja 6, 6 8 ja 48, 686 centimeter square. Okay. Next, the volume of cylinder is 2376 cubic centimeter. The diameter of the base is 12. Then find its height. Volume of cylinder का formula क्या होता है? V equal to pi r square h. R यहाँ से ले लेंगे, h find करनी है. देखिए कैसे निकालते हैं. वॉल्यूम इक्वल टू 2376 क्यूब. डायमीटर इज दिस. इट मीन्स रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 6 सेंटीमीटर. नाउ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. पाई इक्वल टू 22 by 7. आर स्क्वायर इज 6 into 6 into h. And volume is 2376. Height equal to 2376 into 7 by 22 into
6 into 6. Now you can cancel by 11. 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 216. Now 6, 36, again 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3, 3 7 जा 21. हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट ड्रॉ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द व्यूज गिवन यू. ये कैसा सॉलिड बनेगा, ये किस तरीके का पतला उठा हुआ टाइप का बनेगा. ये इसका फ्रंट व्यू ऐसे आएगा, ये अपने बना लेना, नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 6. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 times LB plus BH plus HL. It means 2 times length is 10 into 8, length into breadth, breadth into height, and height into length. Now you can solve 80 plus 48 plus 60. Add these three numbers. 2 into 8, 188. Okay, multiplied by 2, 2 8 just 16, 376 centimeter square. This is the surface area, total surface area of cuboid. Next, find the area of the quadrilateral. देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको डिवाइड किया गया है दो ट्राइंगल में. एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ADC. द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC plus area of triangle ADC. Now ABC area is 1 by 2, base is 6 centimeter and height 3.8. Again 1 by 2, base is same and height is 2 3 जा 6. कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा 24 to 11.4. Again 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 point. Now add 6 4 10, 1 carry 3 3, 33 centimeter square. दोनों ट्राइंगल का निकाल के आपस में ऐड करेंगे, निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. The field is in the shape of trapezium. One of its parallel sides is twice the other parallel side and the distance between them is 100 meter. If the area of the field is 10,500 square meter, find the length of the parallel sides. Okay, देखिए the length of the one parallel side is x, then other is 2x, and the distance between them means h equal to 100 meter, and area of trapezium is 10,500 square meter. Now area, formula of area is 1 by 2 sum of parallel sides into height equal to area. 1 by 2 x plus 2x into h 100 equal to 10,500. Now x plus 2x is 3x. 3x equal to 2 into क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 by 100. Now cancel 210. Then x equal to 210 by 3. It means 70 meter. One side is 70 meter, then the other side is 2x. 2 into 70, 140 meter. This is the solution of question number 3. Okay. Now question number 4. Two parallel sides DC and AB of a trapezium are 12 centimeter and 36 centimeter respectively. If non-parallel sides are
each equal to 15 centimeter. Find the area of the trapezium. पैरेलल साइड्स दिए, नॉन पैरेलल साइड दिए, एरिया निकालना है. दिस इज ए trapezium, this 36 centimeter and 12 centimeter, and non-parallel sides are 15 centimeter. ओके, देखिए अब इसमें हाइट नहीं दी हुई है, हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए, हाइट. तो फर्स्ट वी ड्रॉ द पैरेलल लाइन पैरेलल टू AD CE. क्या लिखेंगे, ड्रॉ CE line parallel to AD. Therefore this will also 15 centimeter. Therefore CE equal to AD equal to 15 centimeter. Now BE, B equal to क्या होगा, AB minus AE. AB minus AE. AB कितना है 36, AE is 12, पैरेलल है. This means 12, it means this also 12. तो 36 minus 12 is 24 centimeter. Okay, this side BE equal to 24 centimeter. Now draw CE, this is the height. CF perpendicular on BE. इसके बाद लिखेंगे क्या, draw CF perpendicular on BE. एंड EF, अब बताइए जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. देयरफॉर BE इक्वल टू हाफ, EF इक्वल टू हाफ ऑफ BE, हाफ ऑफ BE. इट मीन्स 1/2 ऑफ 24. हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. यानी EF इज 12. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, CEF इन ट्राइंगल CEF, इन ट्राइंगल CEF क्या होगा, CE, C इज ए हाइपोटेनस, CE स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. CE इक्वल टू 15 स्क्वायर, CF स्क्वायर निकालना है हमको, हाइट निकालनी है, और दिस इज 12 स्क्वायर. नाउ 225 इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस 144. तो CF स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144, 81. ओके, तो CF इक्वल टू √81 इक्वल टू 9 centimeter. This is the height of the trapezium. We can find the area. The formula of area equal to 1/2 sum of parallel sides into height, and the sum of the parallel sides is 1/2 12 plus 36 into 9, 1/2 into 48 into 9, cancel 24, 24 9 ja 9 4 ja 36, 3 carry, 9 2 ja 18, 3 216 centimeter square. This is the area of trapezium. थोड़ा लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The length, breadth and height of a cuboidal box are 2 meter 10 centimeter, 1 meter and 80 centimeter respectively. Find the area of the canvas required to cover this. क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, पूरा कवर करना है, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. लेंथ इक्वल टू 2 meter 10 centimeter, इट मीन्स 2.1 meter, एंड ब्रेथ इक्वल टू 1 meter and height equal to 80 centimeter. 80 centimeter means 0.8 meter. Okay. Now find the total surface area of the cuboid. Formula is 2 times LB plus BH plus HL. Now 2 into 2.1 into 1, 1 into 0.8 plus 0.8 into 2.1. 2.1 plus 0.8 plus 8 1 ja 8, 8 2 ja 16. It means 1.68 decimal. Add
2 इंटू 8, 0 लगा के यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड प्लेस ऐड होगा 8, 6, 8, 14 और 15, 1 कैरी, 2, 2, 4, 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 2, 9.16 meter square. First the dimension convert into the meter, again put in the formulas and solve. This is the answer of question number 5. Question number 6. A metallic pipe is 0.7 centimeter thick. Inner radius of the pipe is 3.5 centimeter. Length is 5 tm. Find its total surface area. एक मेटेलिक पाइप है जो कि 0.7 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस 3.5, लेंथ 5 dm. दिस इज ए मेटेलिक पाइप विच इज 0.7 सेंटीमीटर थिक एंड हाइट इज 5 dm. 5 dm मीन्स हाइट इक्वल टू 5 dm मीन्स 50 सेंटीमीटर. ओके, हाइट इज 50 सेंटीमीटर. इनर रेडियस 3.5, दिस इज द इनर रेडियस इज 3.5, यानी आर आई मीन्स इनर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. एंड आउटर रेडियस कितना होगा, 3.5 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आउटर रेडियस है 3.5 प्लस 0.7, इट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास. नहीं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. देखिए कितना सरफेस है, 1, 2 एंड दीज आर द रिम्स. एरिया ऑफ द रिम मीन्स किनारे, ये जो किनारे हैं इसका भी एरिया हमको निकालना है. ठीक है, तो फॉर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, इट मीन्स 2 पाई आर इनर एच मीन्स इनर कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर आउटर एच आउटर कर्व सरफेस एरिया, एंड दो किनारे हैं और दोनों रिम्स का एरिया क्या होगा, पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर. आउटर सर्किल में से इनर सर्किल का माइनस करेंगे, देखिए आउटर सर्किल, इसमें से इनर का माइनस करेंगे तो रिम का एरिया निकलेगा किनारे का. 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए, 2 हैं, एक ये और एक. नाउ सॉल्व. 2 पाई एच कॉमन, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 पाई एच, तो आर इनर प्लस आर आउटर, और यहाँ पर भी क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर. पुट द वैल्यू, पाई इज 22/7, द वैल्यू इज पाई इज 22/7, एच इज 50, आर आई 3.5 प्लस 4.2 and 2 into 22/7, 4.2 square minus 3.5 square, 44, 100, 52 is 100, 22, 100/7 into 7.7 plus 44/7, a square minus b square, it means a माइनस बी, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस करेंगे. ठीक है, नाउ 7 से कैंसिल 1.1, 7 से कैंसिल 0.1. नाउ मल्टीप्लाई, 11 2 ज़ा 22, 23, 0 सॉरी 2 zeros, 11 2 ज़ा 22, 23. The decimal one place 2320 plus 44, it means 4.4 into 7.7, it will come 33.88. Now addition, 0.88, 3 to 5, 2353 centimeter square is the total surface area of the cylinder. A cylinder of curved surface area 1250 meter square is formed from a rectangular metallic sheet. Find the dimensions of the rectangular sheet if its length is double its breadth. रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बताना है कि लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेथ. द
CSA of the cylinder is 1250 meter square. The CSA of cylinder equal to 1250 meter square, and a rectangular sheet whose breadth is x, then length is 2x. Let breadth equal to x, then length equal to 2x. Area of sheet equal to CSA of cylinder. It means x into 2x equal to CSA of cylinder is 1250. Now x square equal to 1250 by 2, 625. X equal to under root 625, 25 meter. It means breadth equal to 25 meter and length equal to 2 into 25, 50 meter. This is the length and breadth of the rectangular sheet. The diameter and the length of a roller are 84 centimeter and 120 centimeter respectively. In how many revolutions can the roller label the playground of area 1584 square meter? रोलर है जिसके की लेंथ एंड डायमीटर दोनों दिया हुआ है और वो प्लेग्राउंड पर कितने रोल करता है, इस तरीके से रोलर चलेगा तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल टेक टू कवर द एरिया ऑफ 1584 meter square. Diameter equal to 84 centimeter. Now radius equal to 84 by 2, 42 centimeter. And length of the roller, it means height of the roller is 120 centimeter. Now CSA of the roller, how much area will cover in one revolution? Curved surface area of the roller. Curved surface area formula is 2 pi r h. 2 into 22 by 7, radius is 42 and height is 120. Now cancel by 7, 44 into 0, 720. Now multiplied by 44, you will get 31680 centimeter square. Now the area of the field, area of field 1584 meter square. It means 1584 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 1 मीटर इक्वल टू 100 एंड अदर मीटर, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी बार वो, एरिया ऑफ द फील्ड 1584 डिवाइडेड बाई CSA ऑफ रोलर 31680. Now cancel 0, 15 8 over 2 za 2 5 ja. It means how many revolutions? 500. Okay. Question number 9. Water is pouring into a reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. Okay. Volume equal to 108 meter cube. 1 meter cube equal to 1000 liter. 1 meter cube equal to 1000 liter. It means volume equal to 108 into 1000 liter. 108,000 liter. The water flows at the speed of 60 liter in a minute. 60 liter per minute. The time equal to time taken to fill the reservoir, volume divided by 60. Now cancel by 6. 6 1 ja 6, 6 8 ja 48. 1800 minute.
1 minute 60 liter. Okay, minute, and the hours 30 hours. Divided by 60, you will get 1800 by 60. You will get 30 hours. Now question number 10. Question number 10. An iron pipe is 21 meter long and its exterior diameter is 8 centimeter. If the thickness of the pipe is 1 centimeter and the iron weighs 8 gram per cubic centimeter, find the weight of the pipe. Okay. The exterior diameter equal to 8 centimeter. It means outer radius is 4 centimeter. And the thickness is 1 centimeter. It means inner radius is 4 minus 1, 3 centimeter. And height equal to 21 meter. 21 meter means 2100 centimeter. Now find the volume of this hollow pipe. Okay. The volume of a pi, formula is pi r outer square minus inner square into h. Put the values 22 by 7, 4 square minus 3 square into h is 2100. Now you can cancel 300. It means 22 into 300 into 16 minus 9 is 7. Now multiply 6600 into 7. Again multiply 7 6 is 42. So 42 and 4 itna cubic centimeter. And weight is equal to 8 gram per cubic centimeter. Now multiply 46200 into 8. This will get in gram. Multiply 0 0 8 2 is 16. 8 2 is 16. 8 6 is 48. 49. 4 8 4 is 32 or 4 36 gram. Now convert into the kg divided by 1000. You will get 369.6 kg. Okay. Now question number 11. A well is 20 meter deep and its diameter is 7 meter. The earth which is so dug out is spread evenly on a rectangular plot 22 meter long, 14 meter broad. What is the height of the platform? यानी एक सर्कुलर वेल में से मिट्टी निकाल के एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पर डाली जा रही है. इट मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म. Diameter of the well is 20 meter deep and diameter 7 meter. It means radius equal to 7 by 2 meter and height is 20 meter. 20 meter deep. And length of the cuboid 22 meter. Breadth equal to 14 meter. लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. एक मिनट. वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल. एल इंटू बी इंटू एच. और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. नाउ 22 into 14 into h equal to 22 by 7. Radius is 7 by 2 into height h. Now cancel this 7. Again h equal to 22 into 7 by 2 into 2. 22 into 14 into h is equal to h is well is height 20 meter. Sorry, put here 20. Now cancel 4 5 ja 20. Only you will get 22 into 7 into 5 and 22 into 14 niche. Cancel 7 2 ja 14. 5 by 2 is equal to 2.5 meter. Height of the platform is 2.5 meter. Question number 12. The volume of a right circular cylinder is 448 pi centimeter cube. Height is 7 centimeter. Find it lateral surface area and total surface
area. Volume of cylinder equal to 448 centimeter cube होगा and the height is 7 centimeter. The formula of volume is pi r square h is equal to volume. Now put the values. 22 by 7 into r square h is 7. 448 pi. 448 pi. Here is the pi. Don't put the cancel. Pi r square into h equal to 448 pi. Cancel pi. R square equal to 448 by 7. 7 6 ja 64. R equal to root 64, it means 8 centimeter. रेडियस एंड हाइट दोनों पता है. अब हमको क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h. 2 into 22 by 7, 8 and 6. Height is 7. Cancel 7. 44 into 8. 352 centimeter square. And total surface area. Formula of total surface area is 2 pi r and r plus h. 2 into 22 by 7, r is 8 and 7 plus 8. 44 into 8 into 15 by 7. 44 into 8 is 352 into 15 by 7. Now multiply. Get 5280 by 7. 7 7 ja 40. 7 54.28 is the curved total surface area. This is the norm. Verify Euler's formula for square pyramid, triangular prism and rectangular prism. This is a square pyramid. Okay. The number of faces of a square pyramid is 1 and 4 vertically. Total faces is 5. Edges equal to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Edges 8. And vertices equal to 5. 1, 2, 3, 4 and 1 vertex is here. Vertex is 5. Now the Euler's formula equal to F plus V. F plus V means 5 plus 5 equal to 10. And E plus 2, 8 plus 2 equal to 10. Therefore, F plus V equal to E plus 2. Verified. Euler's formula verified. F plus B equal to E plus 2. Now, triangular prism. Triangular prism, number of faces equal to 1, 2, top and bottom 2 and 1, 2, 3, 5 faces. And vertices equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vertices 6. And edges equal to 3, 3, 6 and 3, vertical 3, 9. Now F plus V equal to 5 plus 6, 11. And E plus 2 equal to 9 plus 2 equal to 11. Therefore, F plus V equal to E plus 2. Verified. Next is rectangular prism. Rectangular prism is a cuboid. Number of faces 6, vertices 8 and edges equal to 12. Vertices means corner, 8 corners, and edges is the lines, and faces is these are the faces, 6 face. Now F plus V equal to 6 plus 8, 14, and E plus 2,
12 plus 2, 14. Therefore, F plus V equal to E plus 2. The Euler's formula verified. Okay.